आज हम क्रिएट करेंगे एक रेडियंट ब्राइडल ग्लो एंड इट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन ग्लो ब्राइडल लुक। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं देन यू शुड नो दैट आई ऑलवेज क्लीन माय क्लाइंट्स स्किन विद अ नाइस क्लेंजिंग बाम। मेरी क्लाइंट की स्किन कितनी भी क्लीन हो बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता और मैं हमेशा एक क्लेंजिंग बाम से ही अपना मेकअप शुरू करूंगी। I apply cleansing balm all over the face and I nicely massage it into my client's skin. I love the cleansing balm from Charlotte Tilbury. This is one of my favorite और वही balm मैंने आज भी अपने client की skin पर apply किया है। और अब मैं उसको clean करूंगी with this damp sponge. These are nice disposable sponges and I love them. उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी एक ग्लो टोनर और ये ग्लो टोनर भी शार्लेट टिल्बरी का है। अब इसके बाद अप्लाई करूंगी मैजिक क्रीम जो कि फिर शार्लेट टिल्बरी की है। आई लव द प्रोडक्ट्स फ्रॉम शार्लेट टिल्बरी बिकॉज दे प्रोवाइड इमेंस ग्लो और मेरे मेकअप का फाइनल रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स के बाद बहुत अच्छा आता है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हर आईज और आई शुरू करने से पहले मैं अंडर आई पैचेस अप्लाई कर रही हूँ अपने क्लाइंट के बिकॉज माई क्लाइंट सीम्स वेरी वेरी टायर्ड और उनकी आईज को फ्रेश फील कराने के लिए मैं अंडर आई पैचेस अप्लाई कर कर आईज पर काम करना शुरू करूँगी। अब मैं अंडर आई प्राइमर अप्लाई करूँगी, उसको अच्छी तरह पाउडर करूँगी और एक अच्छा सा कोरली पीच कलर का ट्रांजिशन कलर लेकर उसे ट्रांजिशन एरिया में अप्लाई करेंगे। Not very stark, very soft and subtle color because I don't want to do too much on the eyes. और हम मेन लिड एरिया पे एक अच्छा सा नाइस शैम्पेन गोल्ड कलर लेंगे which is a nice metallic color. अब इस शीन को और पॉप आउट करने के लिए मैं इसके ऊपर एक हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ which is from again Charlotte Tilbury and this is their Pillow Talk collection and this is so beautiful. Just to make the outer corners look a little more deeper, उसमें एक थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करके outer corners को डीपन करूँगी और अगर all over the lid पे थोड़ा सा ग्लिटर देने की ज़रूरत है and I love these natural glitters from Kat Von D. They're very subtle, very minute and they look really beautiful. बहुत ज़्यादा स्टार्क लुक नहीं क्रिएट करना चाहती इसलिए एक ब्राउन कलर का लाइनर लूँगी। This pencil is from Forever 52 and the color is so beautiful. It's a nice chocolate brown color और उसे लैश लाइन पर लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। I don't want to give her black because black gives a more intense look और मुझे बहुत soft look क्रिएट करना है। Now I'm going to do the brows. For me, in a makeup, the brow needs to be perfect. Now I'm going to curl her lashes because lashes लगाने से पहले मैं original lashes को curl करना हमेशा पसंद करती हूँ because इससे हमारी natural lashes और जो artificial lashes हैं वो दोनों blend कर जाती हैं seamlessly. Now before starting the base, I'm just going to outline her eyebrows ताकि मेरी brows बहुत neat, sharp और clean दिखें। ऐसा करने से बेस करते वक्त मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि मेरी eyebrows की शेप फिर खराब हो जाएगी and I can work free-handed.
Now before starting the base, I'm just going to apply a nice glowing serum all over the face because मुझे एक बहुत radiant glass skin look create करना है और under eyes को नहीं भूलेंगे and I'm always going to apply a under eye cream before I start with the base. I'm applying the primer which is from YSL. And now on all her under eye dark areas or pigmented skin, मैं एक peach color का color corrector लेकर उन एरियाज पे अप्लाई करूंगी जहां मुझे लगे कि मेरे क्लाइंट की स्किन थोड़ी सी पिगमेंटेड है. एंड आई लव दी स्मॉल पैलेट्स फ्रॉम मैक फॉर कलर करेक्शन बिकॉज इनमें बहुत सारे शेड्स एक ही पैलेट में हैं एंड यू कैन वर्क विद लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्शंस विद द सेम पैलेट. और ये पैलेट भी अच्छे खासे 2 या 3 कलर्स में अवेलेबल है. सो अगर आपके पास ये पैलेट है देन यू कैन वर्क ऑन एनी स्किन टोन. Now for making the look very, very radiant, I'm applying a nice highlighter just on the high points of the face before applying the base. Because मुझे पता है कि मेरा base बहुत ही light होगा, it's not going to be very thick and this highlighter is definitely going to peek through the base. Now I am applying the base. And my base is not going to be very thick. I will apply it in small areas और apply करने के बाद उसे अच्छी तरह ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी. एक एरिया पे अप्लाई करूंगी और उसे ब्लेंड करूंगी. Then I will move forward to the other area. फिर उसे ब्लेंड करूंगी और फिर आगे बढ़ेंगे. ऐसे ऐसे स्मॉल एरियाज में काम करेंगे हम ताकि हमारा मेकअप बहुत सीमलेस, बहुत वेल ब्लेंडेड लगे. And let's not forget the ear and the neck. हर वो visible area, you have to cover that area for sure. Now I'm going to highlight the center of the face with a color which is 2 shades lighter than the foundation. Just the center of the face. अब हम एक अच्छा सा स्किन टोन का कंसीलर लेकर अंडर आई एरिया को कंसील करेंगे. मैं हमेशा कंसीलर फाउंडेशन के ऊपर लगाती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कंसीलर लगाने के बाद अगर हम फाउंडेशन करें तो हमारा कंसीलर मूव कर जाता है और उसे लगाने का फ़ायदा नहीं होता. अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे एंड आई ऑलवेज अप्लाई कॉन्टोर फर्स्ट ऑन माई हैंड और उसे बिग ब्रश से मैं अच्छी तरह हाथ पर ब्लेंड कर कर फिर स्किन पे अप्लाई करती हूँ. इसके बाद ब्लश एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर लिक्विड. पाउडर करने से पहले मैं सारे लिक्विड प्रोडक्ट्स से काम करूँगी और उसके बाद फेस को अच्छी तरह पाउडर करूँगी. नाउ आई विल स्टार्ट पाउडरिंग एंड आई विल पाउडर हर अंडर आइज फर्स्ट and then the rest of the face because under eyes और smile line ऐसे areas हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा creasing होती है और इन्हीं 2 areas को मैं पहले set करती हूँ और फिर rest of the face पे powder apply करती हूँ. Now I'm going to do the powder contour and now the blush. A very soft pink blush. Because I want a very nice, dull, soft kind of look. हम वही सॉफ्ट पिंक कलर अंडर आई पे भी करेंगे. और इनर कॉर्नर में एक नाइस मेटालिक शेड देंगे जस्ट टू ब्रिंग आउट द आईज.
हम वाटर लाइन में एक नाइस स्किन कलर की पेंसिल अप्लाई करेंगे और फाइनली आईज पर मस्कारा अप्लाई करेंगे। The mascara that I'm using here is the Lash Clash mascara from YSL. It's a beautiful mascara. और lower lashes के लिए I am using this mascara from MAC. Now I'm going to set all this with a nice spray from MAC and apply a nice highlighter all over her collarbone area and her face. Now we come on lips and I'm going to outline them with a nice peachy pink lip liner, a very soft muted color. And then finally apply gloss on her lips. Finish it with a fixing spray and my radiant golden glam bridal look is here. I hope you like the look, and if you like it, please do not forget to like, share and subscribe.